Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 83rd lecture of this series of CRPC. So in the previous lecture we had looking at the topic jurisdiction, and in that jurisdiction, let's see section 185, power to order cases to be tried in different session divisions. Notwithstanding anything contained in the preceding provisions of this chapter, the state government may direct that any case or class of cases committed for trial in any district court may be tried in any session division, provided that such direction is not repugnant to any direction previously issued by the High Court or the Supreme Court under the Constitution or under this code or any other law for the time being in force. तो अगर कोई हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर नहीं दे रखा है, अगर ऑर्डर दे रखा है स्पेशली विद अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर दिस कोड या फिर सीआरपीसी में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या अंडर दिस कोड और एनी अदर लॉ के अंडर कोई हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखा है, तब तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती. अन्यथा स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा डायरेक्शन दे सकती है कि एक पर्टिकुलर केस या क्लासेस ऑफ केस committed for trial in any district may be tried in any session division. So basically the state government may direct for any case or class of cases that the state government may direct that any cases or class of cases committed for trial in any district may be tried in any sessions division. And the definition of sessions division is given section 7 of the CRPC. Session division consists of a session court or more than one session court together constitute a sessions division. तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है एक केस को या कुछ केसेस को या फिर क्लास ऑफ केसेस को दैट दे विल गो अंडर द सेशंस डिवीजन्स कोर्ट इफ इट इज नॉट repugnant, if the direction is not repugnant to any direction previously issued by High Court or Supreme Court. Now 186, where two or more courts have taken cognizance of same offence and a question arises as to which of them ought to inquire into or try that offence, the question shall be decided. If the courts are subordinate to the same High Court by that High Court, if the courts are not subordinate to the same High Court by the High Court within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction the proceedings were first commenced, and thereupon all other proceedings in respect of that offence shall be discontinued. So this section we had already seen. जब two or more courts have cognizance एक साथ ले लेती है और क्वेश्चन एरोज होता है कि किस में चलेगा, और अगर सेम हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है दोनों कोर्ट तो सेम हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, और या अलग अलग हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है तो वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी जिस हाई कोर्ट के अंडर वाले कोर्ट ने पहले प्रोसीडिंग से स्टार्ट की थी. नाउ लेट्स सी सेक्शन 187. When a magistrate of the first class sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed outside such jurisdiction, whether within or outside India, means the person is present in his jurisdiction right now, but he has committed the offense outside his jurisdiction. Suppose a person A is present in his jurisdiction right now, but he has committed offense somewhere else, in some other jurisdictions. Offense उसने कहीं और किया है, but right now he is present in his jurisdiction, or maybe he had committed the offense abroad outside India, but right now he is present within his jurisdiction. When a magistrate of the first class sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed outside such jurisdiction, whether within or outside India, an offense which cannot, under the provisions of section 172, 185, or any other law for the time being in force, be inquired into or tried within such jurisdiction, but is under some law for the time being in force in India,
means this accused for that offense cannot be tried in his jurisdiction because he has committed the offense some elsewhere. इसके jurisdiction में ट्राई नहीं हो सकता क्योंकि इसने ऑफेंस कहीं और किया है, या तो इंडिया में किसी और jurisdiction में या फिर outside India abroad. But he is tribal in India. So the offense he has committed somewhere in other jurisdiction, he can be tried in that area. Or if he had committed offense abroad, then then also he can be tried in India. For the time being enforced tribal in India, such magistrate may inquire into the offense as if it had been committed within such local jurisdiction and compel such person in the manner herein before provided to appear before him, and send such person to the magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offense. Or if such offense is not punishable with death or imprisonment for life, and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate acting under this section, take a bond with or without sureties for his appearance before the magistrate having such jurisdiction. So the point is, there is a person accused who is right now found in the jurisdiction of JM1. Here in his jurisdiction he is found right now, but he has committed the offense in jurisdiction of some other JM, maybe this or maybe this. तो उसने किसी और JM के jurisdiction में offense किया है, so he is tribal here. और उसने abroad offense किया है, then also he is tribal at least in India. When you will study 188 you come to know. So presently अब present है इसके jurisdiction में, so this magistrate, what this magistrate can do, he can conduct the inquiry or arrest that person. So he can conduct an inquiry, even he can arrest that person, he can even grant the bail to that person. And the bail bond will provide, the accused will present in the court of this magistrate as and when required. मीन सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो अगर एक कोई व्यक्ति आपके जुरिडिक्शन में प्रेजेंट है और आपके जुरिडिक्शन में उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, फिर भी आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो, उसकी इंक्वायरी कर सकते हो. इंक्वायरी का मतलब ये नहीं कि आप फुल फ्लैश्ड इंक्वायरी करोगे. इट मीन्स थोड़ा बहुत इंक्वायरी करके आप यू विल ट्रांसफर द केस टू दैट मजिस्ट्रेट वेयर द ट्रायल कैन बी कंडक्टेड. रीड इट अगेन. When a magistrate of the first class sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed outside such jurisdiction an offence which cannot, under the provisions of 177 to 185 or any other law for the time being in force, be inquired into or tried within such jurisdiction, but is under some law for the time being in force, triable in India. Means ए ने जो ऑफेंस किया है वो जेएम फर्स्ट क्लास नंबर 1, इसके जुरिडिक्शन में ये ट्रायल नहीं हो सकता, बट इट कैन बी ट्रायल. जो ऑफेंस किया इट कैन बी ट्राइड इन सम अदर प्लेस इन इंडिया. इंडिया में ट्रायबल है बट उसके जुरिडिक्शन में ट्राई नहीं हो सकता वो केस. सच मजिस्ट्रेट में इंक्वायर इनटू द ऑफेंस एज इफ इट हैड बीन कमिटेड विद इन सच लोकल जुरिडिक्शन. सो इट इज अ लीगल फिक्शन क्रिएटेड कि आप उस ऑफेंस को फिर भी इंक्वायर कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो उस ऑफेंस में एज इफ इट हैड बीन कमिटेड विद इन योर जुरिडिक्शन, एंड कंपेल such person in manner herein before provided to appear before him, and send such person to the magistrate having jurisdiction to inquire into and or try such offence. Or if such person is not punishable with death or imprisonment for life, and such person, then the bail can be granted to such person by the magistrate who is inquiry. मतलब आप उसको गिरफ्तार करके प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके और आप मैटर को ट्रांसफर कर दो एरिया मजिस्ट्रेट के पास और एक्यूज्ड को भी वहां पर प्रेजेंट करवा दो, और या फिर आप चाहो तो एक्यूज्ड को बेल दे दो आफ्टर फिलिंग द बॉन्ड कि वो वहां पर अपीयर होगा इस कोर्ट में, और आप केस को ट्रांसफर कर दो एरिया मजिस्ट्रेट के पास. So basically this section is empowering the magistrate to conduct the preliminary inquiry in those cases in which he does not have jurisdiction. Next clause, when there are more magistrates than one having such jurisdiction. अब suppose
this magistrate, judicial magistrate 2 and judicial magistrate 3 court both have jurisdiction. अब ये वाला जो judicial magistrate है इधर ट्रांसफर करेगा या इधर ट्रांसफर करेगा. So in that case they are saying the high court will decide. When there are more magistrates than one having such jurisdiction and the magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the magistrate to or before whom such person should be sent or bound to appear, the case shall be reported for the orders of the High Court. He will send the matter to the High Court and High Court will decide where you have to transfer the matter. अब इसके बाद सेक्शन 188 is basically related to section 4 of the IPC. जो section 4 IPC में लैंग्वेज है वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी. So it is basically talk about, suppose there is a Indian A accused. He goes to Australia and in Australia he committed an offense, and whatever he has committed there, that is declared into the IPC an offense. जो भी एक्ट उसने वहां पे किया है वो इंडिया में एक ऑफेंस डिक्लेयर्ड है, जैसे मर्डर कर दिया, थेफ्ट कर दिया, रॉबरी, डकैती, whatever offense that is declared in IPC. So whatever you have committed there, that is also an offense in Indian law, whether it be IPC or some other law. So in that case, when he comes to India, then he can be tried by any court in India. IPC में हम पढ़ चुके हैं, अगर आप इंडियन सिटीजन हो और आप घूमने कहीं जाते हो बाहर, या फिर किसी भी काम से हम बाहर जाते हैं फॉर एनी पर्पज आउटसाइड इंडिया, अगर कोई गया है और वो इंडियन सिटीजन वहां पर जाकर अगर कोई रॉन्ग कर दे, एंड दैट रॉन्ग इज एन ऑफेंस अंडर IPC. ऑब्वियसली इन ऑस्ट्रेलिया IPC डज नॉट अप्लाई, वहां पे तो उधर का पीनल कोड लगेगा. फिर भी दैट एक्ट इज एन ऑफेंस as per IPC. So when this person came back to India, maybe his own or by extradition. So when this person comes, this person may be tried for that offense in India. अब सवाल ये है, who will try that person? CRPC is concerned with jurisdiction. अब इंडिया में ट्राइड तो होगा पर कौन ट्राई करेगा उसको, because he is not committed any offense within the jurisdiction of any magistrate in India. उसने तो offense ऑस्ट्रेलिया में किया है. उसके लिए द आंसर इज गिवन दैट वेयर एवर ही फाउंड्स, जिस मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन में पाया जाएगा, दैट मजिस्ट्रेट विल ट्राई. सपोज ही कमिट्स एन ऑफेंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ ही टेक द फ्लाइट एंड कम्स टू दिल्ली, एंड दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही कम्स आउट, ही इज अरेस्टेड देयर. सो द जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द कोर्ट whichever having the jurisdiction in इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला एरिया, दैट मजिस्ट्रेट कैन ट्राई इट. अब मान लो वहां से निकलकर वो मुखर्जी नगर आ गया, हु कैन ट्राई फॉर दैट ऑफेंस? इफ ही इज अरेस्टेड एट मुखर्जी नगर, वहां का मजिस्ट्रेट कैन ट्राई. सो जहां पे भी वो मिलेगा वहां का मजिस्ट्रेट कैन ट्राई कर सकता है. जहां भी मिलेगा मतलब जहां भी गिरफ्तार होगा वही मजिस्ट्रेट उसका ट्रायल कर सकता है. उसी तरीके से एक फॉरेनर है, नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, बट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस इन इंडियन शिप और एयरक्राफ्ट, then also he can be punished in India. अब उसके बाद वो इंडिया में जहां पे भी मिलेगा, he can be tried by that particular court. So read section. When an offense is committed outside India by a citizen of India, whether on high seas or elsewhere, or by a person not being such citizen on any ship or aircraft registered in India. So I have told you two situations. So I told you there are two situations. One is Indian citizen and another foreigner. When the foreigner commits offense upon Indian ship or aircraft, and if an Indian committing an offense abroad, कहीं भी, anywhere, not on ship or aircraft, कहीं भी, anywhere, these two as per section 4 of IPC, they can be पनिशेबल इन इंडिया. तो इनका जो ऑफेंस है वो इंडिया में पनिशेबल होगा. सो इट इज पनिशेबल अंडर इन इंडिया, दैट इज डिक्लेयर्ड इन सेक्शन 4 ऑफ द IPC. बट विच कोर्ट विल हैव द
jurisdiction to try the offense if it is permissible. So CRPC talks about this question, this portion. So there they are saying wherever he is caught. So read again. He may be dealt with in respect of such offense as if it had been committed at any place within India at which he may be found. Now suppose this person commits an offense in Dubai and he was a resident. Suppose a person gone to Dubai and he is a resident of Mumbai in India, and after returning to from the Dubai he go to Ghaziabad where his native place, यहाँ पे उसका रेजिडेंस घर है, and he has arrested near दिल्ली गाजियाबाद. तो उसका ट्रायल कहाँ पर होगा, मुंबई में होगा या फिर गाजियाबाद में होगा, wherever he is found in Ghaziabad. Here in this example, and the trial will go on in Ghaziabad. Arrested नहीं लिखा है इसमें, इसमें लिखा है wherever. अरेस्ट करा हुआ जरूरी नहीं है कि अरेस्ट हो, wherever he is found. If he is found in Ghaziabad, then he cannot say that you will try me at Mumbai. You are found at Ghaziabad, so you have to try it at Ghaziabad only. Provided that notwithstanding anything in any of the preceding sections of this chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the central government. तो ऐसे cases में any court wherever he is found can try only with the permission of the central government. Provided that notwithstanding anything in any of the preceding section of this chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the government. तो ऐसे cases में जो भी court wherever he found can try him but only with the permission of the central government. Section 189. When any offence alleged to have been committed in a territory outside India is being inquired into or tried under the provisions of Section 188, the central government may, if it thinks fit, direct the copies of deposition made any exhibit produced before a judicial officer in or for that territory or before a diplomatic or consular representative of India in a or for that territory shall be received as the evidence of by the court holding such inquiry or trial in any case in which such court might issue a commission for taking evidence as to the matters to which such depositions or exhibits relate. तो जो भी ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया कमिट हुए हैं उनके जो एविडेंसेस रिसीव करने उसका प्रोसीजर इसमें दे रखा है. सो दिस सेक्शन इज simply tells about the procedure for taking evidence. Suppose a case is offense is committed outside the territory of India in section 188. In such kind of situation, if the judicial officer of that country or territory had taken some evidences or the evidences are produced before a diplomatic consular representative. So those evidences taken in that court or before the diplomatic consular representative, that evidences could be taken into consideration in India also when the inquiry is held before any court in India. So now coming to chapter 31, transfer of criminal cases. Before going to section, let's discuss a case. There is husband-wife. Husband is working at Ambala and wife is at Gandhinagar. This husband filed a divorce petition at Ambala. Husband ने फाइल किया divorce petition wife के खिलाफ at Ambala. And the girl from Ambala left her home and went to Gandhinagar. So abhi she presently staying at Gandhinagar. And her husband is staying at Ambala because he is working there. Now this girl filed an application under section 406 in the Supreme Court. Because दोनों कोर्टों का jurisdiction एक ही high court नहीं है. Both the courts having different high courts. Ambala का पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एंड गांधीनगर का गुजरात हाई कोर्ट. तो ये एप्लीकेशन हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, ये एप्लीकेशन जाएगा 406 में सुप्रीम कोर्ट में. एंड द वाइफ इज क्लेमिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, it is expedient in the interest of justice that the case to be transferred to the Gandhinagar. And on hearing, if the court finds that it is expedient in the interest of justice, then the court can transfer the case from Ambala to Gandhinagar. Similarly, husband can also file for the transfer petition
मान लीजिए जैसे वाइफ ने इसने यहाँ पे डिवोर्स पिटीशन डाला, इसने यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का गांधीनगर में डाल दिया। अब गांधीनगर में ये डोमेस्टिक वायलेंस का दैट इज ट्राइबल अंडर द मजिस्ट्रेट and it is tribal divorce petition is under the family court. So when she filed for the domestic violence, the husband can file under 406 for transfer of this petition, and if it is found by the Supreme Court that it is expedient in the interest of justice, it can transfer the case. So चाहे तो H केस को ट्रांसफर करवा के अम्बाला मंगवा ले, या फिर W केस को चाहे तो ट्रांसफर करवा के गांधीनगर मंगवा ले. Since it is under two different high courts, so application would go to Supreme Court 406. So जिसने CPC पढ़ रखी है उसको सेक्शन 25 CPC से को रिलेट कर लो. जैसे 406 यहाँ पर है वैसे ही सेक्शन 25 वहां पर है CPC में, जैसे 406 CRPC में. जैसे यहाँ पे 407 है वैसे ही सेक्शन 24 CPC में. अब इस केस में मान लीजिए हस्बैंड इज वर्किंग एंड शी इज हाउसवाइफ and she is having a small child of 4 months or 5 months. अब इसको बार बार इस केस के रिगार्डिंग अम्बाला आना and traveling such a small child is not expedient in the interest of justice, and she is also not having some source of income, so travel करना would be also tough for that. अगर पैसे के लिए अगर हस्बैंड कह देता है मैं दे दूंगा ट्रैवलिंग वगैरह का ऑल दिस अलाउंसेस, फिर भी ट्रैवल करना इज नॉट पॉसिबल विद स्मॉल चाइल्ड. So in such a situation, such kind of situation अगर आती है तो Supreme Court mainly tilted towards the wife. That is, the court will transfer the case in Gandhinagar. So section 406, whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the ends of justice, it may direct that any particular case or appeal be transferred from one high court to another high court, or from a criminal court subordinate to one high court to another criminal court of equal or superior jurisdiction subordinate to another high court. तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर, या फिर किसी एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफर. So that can be ordered by the Supreme Court, and it is written whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the ends of justice. तो यहाँ पर भी expedient for the ends of justice की बात आएगी. There you will talk about the balancing of your interest. The balancing of interest we would discuss in section 25 of the CPC. Clause 2, the Supreme Court may act under this section only on the application of Attorney General of India or of a party interested, and every such application shall be made by motion, which shall accept when the applicant is the Attorney General of India or Advocate General of State, be supported by affidavit or affirmation. Affidavit में है कि आप ओथ कमिश्नर के सामने जाकर एफिडेविट बनाओगे, और जहाँ तक affirmation की बात है उसमें ओथ की जरूरत नहीं होती. आप सिंपली एक डिक्लेरेशन फाइल कर दोगे that whatever I have stated is correct. लेकिन अगर आप एफिडेविट डालते हो तो then you have to write that on oath whatever I have declared written is correct. So that is affidavit. Clause 3, where any application for the exercise of the powers conferred by this section is dismissed, the Supreme Court may, if it is of opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum not exceeding 1000 rupees as it may consider appropriate in the circumstances of the case. तो अगर आपने झूठा एप्लीकेशन लगाया ट्रांसफर का और आपका एप्लीकेशन डिसमिस हो गया तो कोर्ट आपको 1000 रुपए मैक्सिमम कंपनसेशन के लिए कह देगी. सेकंड क्लॉज में एक पॉइंट था, व्हेन द पार्टी इज फाइलिंग एन एप्लीकेशन इट शैल बी फाइंड बाय मोशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैल बी मेड बाय मोशन? आई हैव एक्सप्लेन्ड in the CPC. मान लो H को एप्लीकेशन लगाना है W के खिलाफ, तो H उस एप्लीकेशन को पहले ड्राफ्ट करके W को उसका नोटिस भेजेगा, और जिस दिन W को एप्लीकेशन मिल गया है उसके मिलने के बाद 14 डेज तक आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन को मूव नहीं करोगे.
मान लो इधर H है, इसने एप्लीकेशन, इसको पहले एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा W को, नोटिस, और इस दिन एप्लीकेशन टाइप किया, इस दिन इसको मिल गया, उसके 14 डेज तक आफ्टर रिसीविंग 14 डेज तक फाइल नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट में. दैट इज यू हैव सेंड द एप्लीकेशन टू द अपोजिट पार्टी एंड द डे अपोजिट पार्टी रिसीव्स इट, उस समय से लेकर 14 डेज तक you cannot move application in the Supreme Court. After 14 days, only the application can move into the Supreme Court. So that is what called the application by motion. So now write down upon the what is meant by the expedient in the interest of justice. इसको और ज्यादा डिटेल में इस टर्म को जब देखेंगे हम, जब सेक्शन 25 सीपीसी को हम डिस्कस करेंगे. बट फॉर दिस टॉपिक एक छोटा सा डिक्टेशन लिख लो इधर. That court has to draw a balance between the interest of both the parties concerned. The court will first examine that if the transfer is not made, then what will be the loss to the applicant, and whether it will be irreparable, and also if the transfer is made, then what will be the loss to the respondent, and whether it will be irreparable. Then the court will draw a balance and examine as to in either of these circumstances whose loss will be more irreparable. The balance of convenience will be said to be tilted in favor of such person, and accordingly the order will be passed. जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हस्बैंड इज सपोज हस्बैंड इज डूइंग जॉब ऑफ जज, एक मजिस्ट्रेट है, एंड वाइफ इज जॉबलेस. अब इसमें अगर इन द एक्सपीडिएंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करें तो हस्बैंड को कैसा करना पड़ेगा कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स छोड़ के जाएगा और वर्क डिले होगा, उसकी वजह से जो पब्लिक है वो भी सफर होगी. एंड हेयर जो वाइफ को लॉसेस है वो क्या है, उसके जो चिल्ड्रन है दैट इज ऑफ 3 or 4 months, तो उसकी परेशानी होगी, और शी कैन नॉट लीव द चाइल्ड विद द नाना नानी, क्योंकि वो बच्चा नहीं रह सकता, फीडिंग वगैरह ऑल दिस आर नेसेसरी थिंग्स. सो इस कंडीशन में जैसे पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा 5 डेट 7 डेट 8 डेट तो उतनी छुट्टी ले सकता है वो जज. So the court will obviously tilt it towards the in the favor of the wife. One more point, Supreme Court has the power to transfer a case from one high court to another high court and one high court subordinate court to another high court subordinate court. लेकिन within one high court, transferring a case from one court to another court, that power Supreme Court does not have. That power is only with the high court of that high court, जिसके subordinate दोनों courts हैं. ये भी हमने सेक्शन 25 सीपीसी में पढ़ रखा है. सो राइट डाउन, द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव पावर अंडर सेक्शन 406 टू ट्रांसफर ए केस विद इन वन हाई कोर्ट jurisdiction from one subordinate court to another subordinate court. Such a transfer can be done by High Court only under section 407. Now let's see section 407. First clause we have already discussed. Let's just read it. Whenever it is made to appear to the High Court that a fair impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal court subordinate thereto, or that some question of law of unusual difficulty is likely to arise, or that an order under this section is required by any provision of this code, or will tend to the general convenience of the parties or witnesses, or is expedient for the ends of justice. So basically term से याद रखना है यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है. First one, fair and impartial inquiry cannot be done. दूसरा, some question of law of unusual difficulty likely to arise. तीसरा, that an order under this section is required by any provisions of this code, or will tend to general convenience of the parties of witness, or is expedient for the ends of justice.
It may order that any offence be inquired into or tried by any court not qualified under section 177 to 185, but in other respects competent to inquire into or try such offence. मतलब अगर किसी कोर्ट के पास टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ना भी हो बट अदरवाइज कंपिटेंसी टू ट्राई है. कंपिटेंसी टू ट्राई याद करो सेक्शन 26 means if otherwise the court is competent to try even if it does not have the territorial jurisdiction, the high court can transfer that case to that court. Means territorial jurisdiction is not a very rigid thing. High court किसी नॉन टेरिटोरियल jurisdiction वाले कोर्ट के पास भी ट्रांसफर कर सकता है. That any particular case or appeal or class of cases or appeals be transferred from a criminal court subordinate to its authority to any other such criminal court of equal or superior jurisdiction. कई बार स्पेशल केसेस होते हैं, मान लो जैसे उस केस में कहीं पर राइट हुए and there are many offenses related to women and property and these cases can be filed in the magistrate court, then the high court may constitute a special court for that purpose. और जितने भी ऐसे केसेस हैं that all be transferred to the special court. That any particular case be committed for trial to a court of session. कमिटल आप 323 में भी करते हो, 209 में भी करते हो और हाई कोर्ट भी तय करता है मजिस्ट्रेट के लिए कि तुम कमिटल करो कोर्ट ऑफ सेशन को. दैट इज अंडर 407. दैट any particular case or appeal be transferred to and tried before itself. Means it can be transferred from one court to another. It can ask the magistrate to commit the court of session. It can create some special court and transfer the special cases, all those cases to that special court. And then it can transfer the case to itself, that is called withdrawal. It withdraw the case and try itself. मान लो हाई कोर्ट ने किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट से केस ट्रांसफर कर लिया अपने पास और खुद ट्राई किया उस केस को. देन विच मेथड ऑफ ट्रायल इट विल फॉलो. अगर कोर्ट ऑफ सेशन से ट्रांसफर किया है अपने पास तो कोर्ट ऑफ सेशन वाला ट्रायल मेथड वो फॉलो करेगा. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से लिया है, वेदर इट इज ऑन इट कैन बी ऑन पुलिस रिपोर्ट और विदाउट पुलिस रिपोर्ट, तो उसी पर्टिकुलर मेथड से जो दे रखा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उस मेथड से वो ट्राई करेगा हाई कोर्ट. अब उसके लिए ये क्लाउज 8 पढ़ लो. व्हेन द हाई कोर्ट ऑर्डर्स अंडर सबसेक्शन 1 that a case be transferred from any court for trial before itself, it shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed if the case had not been so transferred. अब ये तो हो गया कि हाई कोर्ट खुद ट्राई कर रहा है उस केस को. अब हाई कोर्ट ने मान लो JM1 से कमिटल करवा दिया कोर्ट ऑफ सेशन को. Then in what method the court of session would try the case. If committal is done to the court of session, then the court of session would try in the manner of court of session trial. ये जो सेम मेथड वाली बात है, सेम मेथड फॉलो करने वाली जो बात है, सिर्फ तब लागू होगी जब हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है वो केस फ्रॉम लोअर कोर्ट. अदरवाइज जिसके पास केस जो गया है वो अपना ट्रायल मेथड फॉलो करेगा. उसके बाद क्लास 9 देख लो आप. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 197. दैट यू नो ऑलरेडी कि गवर्नमेंट वगैरह के खिलाफ यू हैव टू टेक सैंक्शन. द हाई कोर्ट मे एक्ट एदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टी इंटरेस्टेड और ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव. तो क्लास 2 हमारा कहता है कि दिस ट्रांसफर थिंग मे बी डन एदर अपॉन द पार्टी के एप्लीकेशन पर और एदर ऑन द कोर्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट. अब मान लो किसी मजिस्ट्रेट के पास केस पेंडिंग है एंड ही फाइंड्स द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन इट एंड अनयूजुअल डिफिकल्टी इज टू अराइज. द कोर्ट बिफोर विच द मैटर इज पेंडिंग फाइंड सम अनयूजुअल डिफिकल्टी टू अराइज ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, सो ही मे सेंड मैटर टू द रेफरेंस टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 395 or he may report the matter to the high court and high court can withdraw the case and try itself. That will be done under section 407 clause 2. या तो आपके पास दो चॉइस रहेंगी मजिस्ट्रेट के पास, या तो आप रेफरेंस में डालो क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर डायरेक्टली ट्रांसफर करवा लो हाई कोर्ट के पास. So the magistrate can also refer to the high court or the high court suo moto can do that.
Provided that no application shall lie to the High Court for transferring a case from one criminal court to another criminal court in the same session division, unless an application for such transfer has been made to the session judge and rejected by him. Suppose this is the High Court और इस हाई कोर्ट के अंदर ये कोर्ट ऑफ सेशन है और उसी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर दो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं उसी कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। अब इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आपको केस इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर करना है, तो क्या आप इसके लिए एप्लीकेशन 407 का डायरेक्टली लगाओगे या फिर पहले कोर्ट ऑफ सेशन में लगाओगे? पहले एप्लीकेशन लगेगी कोर्ट ऑफ सेशन में, 408 एक्सेट्रा टॉकिंग अबाउट दैट। अब मान लीजिए दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन है और उसके अंडर में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करना है, तब तो आपकी एप्लीकेशन 407 में लगेगी, हाई कोर्ट में लगेगी। एक कोर्ट ऑफ सेशन के सबऑर्डिनेट से दूसरे कोर्ट ऑफ सेशन के सबऑर्डिनेट करना है तो हाई कोर्ट जाओ। एक कोर्ट ऑफ सेशन से दूसरे कोर्ट ऑफ सेशन करना है तब भी हाई कोर्ट जाओ। लेकिन एक कोर्ट ऑफ सेशन के विद इन दो कोर्ट्स हैं, अगर वहां पर ट्रांसफर करना है देन यू गो टू द कोर्ट ऑफ सेशन। Clause 3. Every application of for an order under subsection 1 shall be made by motion. मैंने बता दिया भाई made by motion का क्या मतलब है। नोटिस जाएगा एडवांस नोटिस which shall accept when the applicant is the advocate general of the state be supported by affidavit or affirmation. तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के अलावा सब that application shall be supported by affidavit or affirmation. The meaning of affidavit and affirmation also explained. Now the clause 4 is talking about अगर application accused ने लगाया है then he may be required to sign a bond. अगर झूठा application लगाया है तो उसका compensation के लिए उसको bond sign करना पड़ेगा। So when such application is made by the accused person, the High Court may direct him to execute a bond with or without sureties for the payment of any compensation which the High Court may award under the subsection 7. Clause 5. Every accused person making such application shall give to the public prosecutor notice in writing of the application together with a copy of the grounds on which it is made, and no order shall be made on the merits of the application unless at least 24 hours have elapsed between the giving of such notice and the hearing of the application. Means the public prosecutor have the right to oppose the application and public prosecutor आपको कम से कम 24 घंटे का prior notice देगा before the hearing of the application. And clause 6, where the application is for the transfer of case or appeal from subordinate court, the High Court may, if it is satisfied that it is necessary so to do in the interest of justice, order that pending the disposal of the application, जब तक pending रहेगी application, the proceedings in the subordinate court shall be stayed, वो stay कर दे subordinate court में जो proceedings चल रही है on such, और उस पर terms भी लगा सकता है कि किस terms पे stay होगी, on such terms as the High Court may think fit to impose, but such stay shall not affect subordinate court's power to remand under section 309. Now section 408, whenever it is made to appear to a session judge that an order under this subsection is expedient for the ends of justice, he may order that any particular case be transferred from one criminal court to another criminal court in his sessions division. So that is what called the transferring of cases in own sessions division. अब ये कोर्ट ऑफ सेशन है, अब ये इसका जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और इसी के जो अंडर में दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और केस इसको ट्रांसफर करना है, तो एप्लीकेशन किसके पास जाएगा? उसी कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगा। अब अगर एक और कोर्ट ऑफ सेशन है और उसके अंडर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एप्लीकेशन इधर से इधर जाना, इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, तब एप्लीकेशन कहाँ जाएगा? देन गो टू हाई कोर्ट. The sessions judge may act either on the report of the lower court or on the application of a party interested or on his own initiative. तो बाकी का जो मेथड है वो सेम है हाई कोर्ट पर, जैसा हाई कोर्ट का है. The provisions of subsection 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, and 9 of section 407 shall apply in relation to application to the sessions judge for an order under subsection 1
as they apply in relation to the application to the high court. जो ऊपर वाले क्लाउज में हमने पढ़ा था वैसे ही इसमें वो क्लाउजेज सेम अप्लाई हो जाएंगे। इफ यू सी क्लाउज 3 क्या कहता है, मोशन इन द एफिडेविट। उसी तरीके से सेशन जज के पास जब एप्लीकेशन लगा हुआ है, इट हैज टू बी इन मोशन along with the affidavit। उसके बाद आगे लिखते हैं एक्सेप्ट दैट सब सेक्शन 7 of that section shall so apply as if for the words 1000 rupees occurring therein the words 250 rupees। तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर, वहां पे हाई कोर्ट के पास 1000 तक पेनल्टी का था, इधर ओनली 250 तक का पावर है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना आप कि 408 में कोर्ट ऑफ सेशन खुद विड्रॉ करके ट्रायल कर सकता है, ये कहीं नहीं लिखा है। 408 is talking about the transferring of the case within that court of sessions division from one court to another। ये विड्रॉ करने की बात आपको 409 में मिल जाएगी। Let's see 409 is session judge may withdraw any case or appeal। A session judge may withdraw any case or appeal or recall case or appeal which he has made over to any assistant session judge or CJM to him। A session judge may withdraw any case or appeal from any assistant session judge or CJM subordinate to him, or the session judge may withdraw any case or appeal which he has make over to assistant session judge or CJM। मीन्स सेशन जज ने खुद ही केस किसी असिस्टेंट सेशन जज को दिया है तो खुद ही तो वो कॉल कर सकता है अपने पास, या फिर द केस इज अदरवाइज पेंडिंग बिफोर द असिस्टेंट सेशन जज और CJM दैट ऑल्सो ही कैन विड्रॉ एंड कंडक्ट द ट्रायल हिमसेल्फ एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस और द हियरिंग ऑफ द अपील एज कमेंस्ड बिफोर द एडिशनल सेशन जज। द सेशन जज मे रिकॉल एनी केस और अपील which he has made over to any additional session judge। असिस्टेंट से भी विड्रॉ कर सकता है और एडिशनल सेशन जज से भी विड्रॉ कर सकता है। सो देयर आर 3 सेशन जज, वन इज सेशन जज, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। सेशन के और एडिशनल के पावर सेम है, लेकिन असिस्टेंट 10 साल तक दे सकता है इम्प्लीमेंट। Where a session judge withdraws or recalls case or appeal under subsection 1 or subsection 2, he may either try the case in his own court or hear the appeal himself or make it over in accordance with the provisions of this court to another court for trial or hearing as the case may be। अब वही हाई कोर्ट वाली बात आ गई यहाँ पे। अब 408 और 409 को मिलाकर पढ़ो तो सेशन जज क्या क्या कर सकता है, अपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से केस विड्रॉ कर सकता है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में असिस्टेंट सेशन जज का नाम लिखा है, एडिशनल सेशन जज का नाम लिखा है, CJM का नाम लिखा है, लेकिन किसी और मजिस्ट्रेट की बात नहीं कर रहा है। So withdrawing from any other magistrate is not possible। That magistrate will make over the case to the CJM and then only the CJM will withdraw it। Then only the session judge will withdraw from the CJM। पहले एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेक ओवर करेगा CJM को और फिर उस CJM से विड्रॉ करेगा सेशन कोर्ट। So court of session cannot withdraw from JM 1 or 2। In that case they have to submit the case to the CJM और CJM के पास जब आ जाएगा वहां से विड्रॉ कर सकता है सेशन को। बट ट्रांसफर आप किसी कोर्ट से कर सकते हो। द सेशन जज इन 408 कैन ट्रांसफर द केस इन वन कोर्ट टू अनदर विद इन हिज ओन सेशन ज्यूरिडिक्शन। अब एक बार आपने विड्रॉ कर लिया है, विड्रॉल के बाद यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ और यू कैन मेक इट ओवर टू अनदर कोर्ट टू मेक इट ट्राई। विड्रॉल के बाद या तो खुद ट्रायल कर सकता है सेशन कोर्ट या फिर किसी और कोर्ट मेक ओवर कर देगा फॉर डूइंग द ट्रायल। नाउ 410 एनी CJM may withdraw any case from or recalls any case which he has made over to any magistrate subordinate to him and may inquire into or try such case himself or refer it to inquiry or trial to other magistrate to inquire into or try the same। सेम पावर है जो कोर्ट ऑफ सेशन में हमने पढ़ी थी। यहाँ पे CJM अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से ले सकता है, उसको फॉर ट्राई कर सकता है या फिर किसी और को मेक ओवर कर देगा फॉर ट्रायल और इंक्वायरी। एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट में रिकॉल एनी केस मेड ओवर बाय हिम अंडर सबसेक्शन 2
of section 192 to any other magistrate and may inquire into or try such case himself. So this is the power of judicial magistrate first class. अगर नीचे वाले किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को दिया है उसने, तो उससे लेकर खुद इंक्वायर कर सकता है और ट्राई कर सकता है. 411. Any district magistrate or sub-divisional magistrate may make over for disposal any proceedings which has been started before him to any magistrate subordinate to him. Withdraw any case from or recall any case which he has made over to any magistrate subordinate to him and dispose of such proceedings himself or refer it to disposal to any other magistrate. So, making over की power clause 1 में, withdrawal की clause B में. Clause A में making over for disposal, अगर किसी DM के पास या SDM के, तो subordinate court को वो दे सकता है for the disposal of that case. और अगर उसको withdraw करना उन पे से, then clause B में वो withdraw भी कर सकता है और खुद लेकर उसका disposal कर सकता है. Any executive magistrate. 412. A session judge or magistrate making an order under section 408, 409, 410, 411 shall record his reasons for making it. So obviously, whatever decision has to make, that should be recorded in reasons. So the reasons for withdrawal or transfer has to be recorded. So that's it for this lecture. Before ending the lecture, let's discuss a point. Suppose an accused is in the custody during the trial and after that he is acquitted on merits. मीन्स ट्रायल के दौरान उसको कस्टडी में रखा और बाद में वो छूट गया ऑन मेरिट्स डिसीजन होने के बाद. देन व्हाट रेमेडी ही हैड फॉर द टाइम केप्ट इन कस्टडी. तो इसमें अगर आपने प्रूव कर दिया दैट द कस्टडी इज इलीगल, तब तो आपको मनी कंपनसेशन मिल जाएगा. बट जब कस्टडी में रखा जाता है दैट इज बोना फाइड एंड ही वुड गेट डिफेंस अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सेट्रा बिकॉज prima facie you believe that he has committed the offense and he keeps in your custody, so they are acting bona fide, and later on if you acquitted ultimately you cannot obtain compensation until and unless you have proved कि उसने जानबूझकर मेलाफाइडली लीगल डिटेंशन में रखा था, तब तो आप कंपनसेशन ले सकते हो. और उसके लिए आप डायरेक्टली रेट फाइल कर सकते हैं कंपनसेशन के लिए 226 या आर्टिकल 32 of the Indian Constitution. But for that, you have to prove that it is mala fide, deliberate and illegal detention. So that's it for this lecture. Thank you for watching this lecture.